Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I'm your teacher, Miss Mehreen Yasir. So, class 2 students, I welcome all of you in our today's English class. Today, the date is 26 July 2021 and the day is Monday. Our today's task, we will do our English holiday homework. We will do page number 21, 22, 23 and 24. In this week, we will cover these 4 pages. So, let's take out your English holiday homework and open the page number 21. This is the page number 21. Let's read and draw. In this page, first of all, we will read and then we will draw. Read the text 3 times for fluency. आपको इस पेज पे एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है. आपने इस टेक्स्ट को कितने टाइम रीड करना है? आपने इस टेक्स्ट को 3 टाइम्स रीड करना है. फिर आपने स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है और जो आप अंडरस्टैंड करेंगे देन आपने स्टोरी को नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे स्टोरी को ड्रॉ कर देना है जो आपने अंडरस्टैंड किया होगा. नाउ वी विल रीड द टेक्स्ट. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम टीना. Tina has a pet rabbit. The rabbit is brown. The rabbit has long ears and a fluffy tail. Tina gives her pet rabbit 3 carrots. The rabbit loves to eat carrots. आपने इस टेक्स्ट को 3 टाइम्स अच्छी तरह से रीड कर लेना है. फिर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और देन आपने इस स्टोरी को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है. Now open the page number 22. This is the page number 22. Let's read, color and find. In this page we will read, then we will color and we will find the answers of questions. Read the story 3 times for fluency. A wish for fish. Here is the story name A Wish for Fish. It is the story of a boy named Josh. Josh has a fish. He wants to swim with the fish. Mom and Josh rush to the ship. They hop on it. The ship stops. Splash. Josh hops off. Josh sees a lot of fish. He pets the fins. Josh caught his fish. He swam with the fish. आपने इस स्टोरी को भी 3 टाइम्स अच्छी तरह से रीड कर लेना है. फिर आपने इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है. देन आपका टास्क क्या है? यहाँ पे कलर द आंसर इन द टेक्स्ट, कंप्लीट दीज क्वेश्चंस. आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो इस स्टोरी से रिलेटेड हैं. आपने इस स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसके आंसर्स को इस स्टोरी में से फाइंड करना है और आपने इस स्टोरी के आंसर्स को देन कलर कर देना है. फर्स्ट आंसर को आप कलर करेंगे रेड कलर से, सेकंड को आप कलर करेंगे ग्रीन कलर से, थर्ड को आप कलर करेंगे ब्लू कलर से और फोर्थ को आप कलर करेंगे पिंक कलर से. This is the page number 23. This page is about picture description. Write a few lines about the picture. Use the word bank given with the picture. Here you see the picture of a cat with clouds, sun, flowers. It is a happy cat. Here is the word bank with words cat, sun, clouds, flowers and happy. You will use these words to write a few lines about this picture. आपने इस पेज पे क्या करना है? आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है कैट की, कैट के साथ आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, कैट गार्डन में है, कैट जो है वो कैट के साथ आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, आपको सन नज़र आ रहे हैं. आपको जो भी इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है. फिर आप इस पिक्चर के बारे में फ्यू लाइंस को राइट कर लेना है. आप इस वर्ड बैंक के वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं. Now open the page number 24. It is the creative writing page. Here is the picture of honeybee. There are 10 points about honeybee. We will use these 10 points for creative writing, like honeybee is an insect, hardworking, makes honey, helps other bees, flies from flower to flower, sucks sweet nectar, 6 legs,
Honey is golden, honey is sweet, good for health. You will use these 10 points for creative writing. आपने इन 10 पॉइंट्स को यूज़ करके हनी बी से रिलेटेड जो है वो क्रिएटिव राइटिंग का एक एस्से लिखना है. Okay, my dear students, I hope you understood this lecture. In any query, please ask in your WhatsApp group. Thank you so much. Allah Hafiz. And don't forget to like, subscribe, and share our official YouTube channel. Allah Hafiz. Take care.